Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 26th of January. The first topic is Supreme Court issues fresh notice. Basically, Supreme Court has issued a notice regarding the freebies that the central government is providing during the election process. We'll see the detail of this and some Supreme Court judgment as well. Second, Centre sent fresh proposal to amend the cadre rules. This is with regards to the recent changes that central government has proposed and many states are posing. Third, Ukraine crisis continue. We'll see the Russia and UK tension amid the Ukraine. Second last is Pfizer to start Omicron specific COVID 19 vaccine trial. And the last is an editorial from Hindu why Republic Day is celebrated. We understand the concept of Republic, how does it evolve, and how the journey has been so far. Apart from this, at the end of this video, there will be some MCQ based questions. These questions are based on current affairs to help you revise the current affair questions. So let's get started. And India is celebrating 73rd Republic Day. Wish you a happy Republic Day for all the aspirants of the Apti Plus Academy. Now, if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we are offering Republic Day sale. Today is the last day that you can avail the discount and offers. There are three offers, one for the UPSC, others for WBCS, and other third is the test series that you can avail. So do check it out. This is the last day. You can apply the coupon code as well. This is mentioned here, Republic Day 10. For more details, you can refer to the description section of this video where I provided a dedicated link for the particular sections or for the offers. Now, starting with the first news of the day, that is Supreme Court issues notice against the Centre Freebies. The first, this is relevant for General Studies Paper 2, Parliament and State Legislature Functioning Conduct of Business Privileges and Issues Arising from it. So what Supreme Court has noted, the Supreme Court headed by the Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramana, they have issued a notice to central government जहाँ पे एक प्ली फाइल की गई थी बेसिकली इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ that states were under huge debt burden and freebies policy that is continuing in the ongoing election season is something which would be causing more repercussion and the state would be only having the burden of that. और जब ये बर्डन स्टेट पे आएगी तो वो किसी और पे नहीं सीधे पब्लिक पे जाएगी बिकॉज द टैक्स पेयर हैज टू पे द एंटायर consequences of it, right? So they said that freebies concept which is continuing should not be there, right? So they have approached the Supreme Court with regards to the election commission mandate that ये election commission की ड्यूटी है कि वो ऐसे political parties को strictly deal करे जो freebies के policies को implement करना चाहते हैं या फिर उनके advertisement कर रहे हैं. Now some argument against the freebies model. जो freebies है ये concept है जो impact करती है public exchequer को. And most of the Indian states do not have a robust financial health. Often very limited resources are available, right? Revenue के terms में या फिर अगर public policy welfare programs की अगर बात करें, the state are limited in terms of the finances they have. So this is first with the argument that is going against the freebies model. Now announcing freebie would definitely hesitate with haste without the legislative debate and does not have the procedures to desire benefit, right? And only end up in irresponsible expenditure, right? For winning an election, the parties basically come up with the announcement. Whether they follow it or not is a different debatable issue, but definitely if it is being implemented तो कहीं ना कहीं स्टेट एक्सचेकर को भी लॉस होती है और उसके जो प्राइस इंक्रीज होते हैं वो अल्टीमेटली एक सिटीजन को ही पे करने होते हैं. सो समथिंग सब्सटैंशियल हैज टू बी कम, नथिंग फ्रीबी हैज टू गो विदाउट द ऐसे स्टेट्स में खास करके जहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टफॉल में चल रही है वहाँ पे फ्रीबीज मॉडल नहीं होनी चाहिए. Now some challenges to freebies model. The first is foremost that the power of EC is limited. जो election commissions हैं उनकी अगर regulations की अगर बात करें freebies model के culture में, so they have a limited power and the promise made by the election manifesto cannot be constructed as a corrupt practices under section 123 of the RPA Act. जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 123 में ये करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं आती है. द रीजन बीइंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक सम कंक्रीट एक्शंस.
Although freebies and poll promises are different in many aspects, and subsidies are required to be implemented with a proper function, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सारे ज़रूरतों को खास करके ऐसी subsidies which is actually helping. You've seen states like Delhi, they are only implementing the subsidies and even the discount in electricity. Even for water also they are providing discount up to some amount. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, 200 यूनिट एट वॉट दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एज फ्री ऑफ कॉस्ट. The government of Uttar Pradesh especially has promised, not the government of Uttar Pradesh, the Samajwadi Party, they have promised that they would be providing 300 unit free of cost if they come into power. But some calculation has to go. This is not something that ultimately the customer has to bear the burden of all the freebies. ना जुडिशियल इंटरवेंशंस की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत फेमस जजमेंट है 2013 की, दैट इज सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, वेयर इट हैज सेज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ freebie culture has been challenged in the Supreme Court. This is again important both for your mains as well as for the prelims examination. So what apex court has noted, Supreme Court ने कहा that case fall under the domain of election commission, right? And it has given certain guideline with regards to the model code of conduct, MCC. You know, the model code of conduct is being implemented जिस दिन से इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है कि इस डेट को इलेक्शन होनी है, उसी सेकंड के बाद से ही वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, राइट? द डे द अनाउंसमेंट हैज कम, विद इन सेम डे ओनली, विद इन दैट पर्टिकुलर आवर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू प्रैक्टिसेस. तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशंस भी कही गई है और एक करप्ट प्रैक्टिसेस को भी के अंदर माना गया. द न्यू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन इंक्लूडेड to clear guideline and ensure that political party do not make such promises in the manifesto. Now, other news, that is Center sent fresh proposal to amend the Carter rule. This particular news is important for General Studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, right? So according to the Department of Personnel and Training, it would have given the second reminder to the state with regards to the changes that has been proposed in the Rule 6.1 of the Indian Administrative Service Rule 1954. We have discussed this news earlier also, but यहाँ पे आपको समझना है कि जो Rule 6.1 है वो क्या है और इसमें changes क्यों की जा रही है. What is the main rationale behind this, right? So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज ऑल इंडिया सर्विसेज? 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है. द फर्स्ट इज आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड इज आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, एंड थर्ड इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. ये जो लोग हैं डेप्यूट होते हैं स्टेट्स में भी, एंड दे आर एलिजिबल टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, राइट? सो दिस इज द रीजन बिंग दिस इज कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज. और किसी भी डेपुटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की नोट चाहिए होती है अंडर द रूल 6.1 ऑफ AIS, जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की. नाउ करेंटली द स्टेट कैन वेटो any IAS and IPS officer deputations और उनको no objection certificates देने होते हैं, then only the center can intake it, right? So यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने अभी रिसेंटली इस पे प्रपोजल लगाई है कि जो रूल 6 है वो अब मैंडेटरी नहीं करेगी स्टेट्स को उनके परमिशंस के लिए, और ये जो प्रपोजल आई है उसके लिए सिर्फ 12 डेज दी गई स्टेट्स को कि वो अपने कमेंट्स यहाँ पे सेंड करें. बट नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंड देयर प्रपोजल. तो कॉन्करेंस विद स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, जो रूल 6.1 है, स्टेट्स के कार्डर ऑफिसर्स के जो ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं या फिर आईपीएस, इवन इट इज आईएएस और आईपीएस, दे कैन बी डेप्यूटेड टू बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी डेपुटेशंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न की एनओसी के बाद होती है. वहाँ पे स्टेट की कॉन्करेंस मैंडेटरी होती है. Now in this proposal जहाँ पे सेक्शन 6.1 को जो है रूल्स को अमेंड की जा रही है, दैट इज फॉर ऑल इंडिया कार्डर रूल और यू कैन से डेपुटेशन कार्डर रूल ऑफ 1954. तो इस प्रपोजल में बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट प्लान टू एक्वायर द पावर of depute IAS and IPS and even IOFS officers to the central government and ministries with our necessity to take the state government note. इसके इस पर्टिकुलर जो डिसीजन ली गई है अमेंडमेंट को लेकर के, चेंजेस को लेकर के, कौन कौन से स्टेट्स इसके फेवर में हैं? हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. These states are in the favor of this proposal. Why? Because these states are ruled by BJP, right? ये BJP गवर्नमेंट स्टेट है. डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी बातें होंगी वो इनको माननी ऑलमोस्ट मैंडेटरी होती है. दीज आर सम ऑफ द पॉलिटिकल थिंग्स, वी नॉट गेटिंग इनटू दैट पार्ट. बट कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से नकारा है. दैट इंक्लूड उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल. और कुछ और स्टेट्स इस पे आए हैं दैट इंक्लूड केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. सो दे वांट ये जो प्रपोजल है
किसी तरह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारे कंट्री में उसको इम्पैक्ट करती है, एंड द पावर दैट हैज बीन गिवन टू स्टेट वुड बी डेफिनेटली इम्पैक्टेड विद दिस. Now, there's a shortage of All India Services Officer. This is what the ministry, the DOPT, has to say. They have asked that they've said that government is facing the shortage of All India Services Officer, whether it is IAS, IPS and IFS. तो उनकी डेपुटेशंस के लिए उन जो मिनिस्ट्रीज में वैकेंसीज हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80% तक की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज की है इन ऑल द मिनिस्ट्रीज. टू फिल दिस दे नीड मोर पर्सनल टू कम, और इसके लिए उनको स्टेट से एनओसी लेने में बार बार दिक्कतें आएंगी. दैट इज द रीजन बीइंग दे सेड दैट सेक्शन 6(1) में ऑलरेडी चेंजेस की जा रही है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट डेप्यूट कर पाएगी और स्टेट्स जो हैं उनकी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now, the available officers are not in the sufficient to meet the requirement. The reason being they are coming with the changes. Now, Ukraine crisis continue. This particular news is important for General Studies Paper 2, Effect and Policies for Developed and Developing Countries. I have taken two news from the Hindu. Basically, एक जो news है that is West is united against the Russia, और दूसरी news थी Russia launches new military exercise near Ukraine border. So I have clubbed this news to make you understand. Unnecessarily इसमें दो news discuss करने का कोई मतलब नहीं है. So Ukraine crisis continue. We'll see the detail of this with the combination of both this news. यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो टोटल यूनिटी है वेस्टर्न पावर की, खास करके जो क्राइसिस चल रही है यूक्रेन में जहाँ पे रशिया ने अपने डिप्लॉयमेंट किए फोर्सेस को, उसको लेकर के सारी वेस्टर्न कंट्रीज की अपनी एक कंसेंट है वेयर दे वांट दैट रशिया शुड नॉट हैव द मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन द यूक्रेन रीजन. दिस इज व्हाट द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज टू से. और पेंटागन जो वहाँ की ऑफिशियल यू कैन से होम मिनिस्ट्री और द थिंग दैट इज बीइंग हैंडलिंग देयर, उन्होंने ऑलमोस्ट 85,000 यूएस ट्रुप्स को स्टैंड बाय में रखा है ताकि वो नाटो को बूस्ट कर सके, नाटो को एड दे सके, जो नाटो के फोर्सेस हैं. एंड इवन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द लीडर एग्रीड ऑन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिटी, जहाँ पे रशिया की इस तरह से जो हॉस्टिलिटी की जा रही है वो खतरा हो सकती है यूक्रेन के लिए. नाउ also on a call, the leader of France, Italy, Poland and European Union were on the same par, on the same basically जो उनके इंस्टेंसेस हैं या फिर जो जो उनकी बातें की गई है उसमें सारे वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ हैं दैट यस रशिया शुड नॉट बी इन्वेडिंग यूक्रेन इन एनी स्टेज. नाउ नाटो को स्टैंड बाय में रखी गई है, ये बातें पहले से चल रही है. दिस न्यूज़ विल कंटिन्यू इन इंटरनेशनल रिलेशन पेज, बट फॉर वी विल डिस्कस दिस न्यूज़ वट एवर कंटेक्स्ट इज डेवलपिंग. बट अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहती है तो जब कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी देन विल गेट इन टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट. तो अभी के लिए नाटो और एलीट फोर्सेज जो हैं यूएस के, दे आर द मेंबर, दे हैव पुट देयर फोर्स ऑन स्टैंड बाय, जहाँ पे जेट्स, बूस्टर्स, ये सारी चीज़ें जो डेनमार्क, स्पेन और नीदरलैंड ने भी हेल्प करने की बात की है, सो दैट रशिया कुड नॉट इन्वेड यूक्रेन. नाउ रशिया हैज़ लॉन्च अ न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज. ये जो सेकंड पार्ट ऑफ न्यूज़ है उसकी तरफ से ये कंटिन्यूएशन से. तो रशिया मिलिट्री ने लॉन्च किया है अपने ड्रिल ऑपरेशन वेयर दे हैव डिप्लॉयड ऑलमोस्ट 6,000 ट्रूप्स, जहाँ पे साउथ सदर्न और क्रीमिया पेनिसुलर रीजन पे डिप्लॉयमेंट. Russia recently said that military exercise near Ukraine in Crimea, as it accused कि यूएस ने टेंशन को एक्सलेट करने की कोशिश की है, the reason being they are having the deployment. And Russian military said that it has launched drill involving 6,000 troops in the south and the Crimea Peninsula from 2014 onward. They have this deployment, but अब और ज़्यादा बढ़ा दी गई है. The drill involved the flaring exercise with the fighter jet, boomers, anti-craft systems, जहाँ पे Black Sea और Caspian Sea में fleets already मेंटेन की गई है. टॉकिंग अबाउट रशिया, इंडिया हैज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप विद रशिया. द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज गुड, बट इंडिया ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया इस टॉपिक पे. ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं आई है सब्जेक्ट्स पे. पोटेंशियल इन्वेजन्स की अगर बात करें, दिस वॉज अ एक्यूजिंग ऑफ रशिया, जहाँ सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को एक्यूज किया है कि ये जो इन्वेजन है वो प्रो वेस्टर्न यूक्रेन कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी जा सकती है. एंड इवन the tension that Russia has had could have lead to the Cold War in Ukraine. रशिया डिनाई करती है अपनी ये सारी चीज़ों को, जहाँ पर उन्होंने कहा दे आर नॉट इवेडिंग यूक्रेन एट एनी कॉस्ट. And Russia has put forward that the list of security demand, including the guarantee that Ukraine would never be allowed to join NATO. NATO forces Ukraine को join नहीं करेगी. And even the alliance's forces would put back the Eastern European country that has joined the bloc after the Cold War. So रशिया एक गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन किसी भी हालत पे नाटो फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करती है. एंड इवन व्हाट द नाटो फोर्सेस एंड यूएस अलाइज, नाटो फोर्सेस और यूएस जो अलाइज है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर
रशिया ने इन्वेड किया, देन देयर वुड बी हेवी कॉन्सिक्वेंसेस एंड सैंक्शन दैट वुड बी इम्पोज्ड टू द कंट्री. Now, Pfizer start Omicron specific COVID-19 vaccine trial. This particular news is important for General Studies paper 2, issues related to development and management of health. So recently Pfizer और बायोटेक ने मिलकर के एक क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट की है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन की जो वायरस है उसके लिए एक स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने की बात की है. एंड द कंपनी इज प्लानिंग टू टेस्ट द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द न्यू वायरस, और यू कैन से जो न्यू वैक्सीन है वो सिर्फ डेडिकेटेड होगी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए. राइट, more than 14,000 it's like 1,420, this is the correct number, 1,420 adult are expected to be enrolled in the United States. तो इनकी ट्रायल होनी है. There would be there would be the volunteer that would be actually part of this clinical trial, and the trial would involve the age group between 18 to 55. Now the trial is taking place across the United States and South Africa because ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से ही इवॉल्व हुई है. Now, trials by other vaccine manufacturers apart from Bharat Biotech and Pfizer, Moderna जो यूएस की बहुत बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक शॉट्स के लिए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका दे हैव स्टार्टेड their newer version of vaccine which would be dedicated to the Omicron. ये वही collaborations हैं जहाँ पे Serum Institute के साथ इन्होंने मिलकर कोविड शीट भी बनाई है. राइट, एंड द वैक्सीन डेवलपर हैज ऑलवेज प्लान टू ट्वीक देयर ओरिजिनल कोविड वैक्सीन, जहाँ पे नए वेरिएंट जो इमर्ज हो रहे हैं उसको लेकर के भी कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी वैक्सीन बनाए जाए जो हर एक नई म्यूटेड वायरस जो है नए वेरिएंट की उस पर इफेक्टिव हो. बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट पॉसिबली दे विल बी ट्राइंग कि अगर कोई इसके एक दो बार म्यूटेशन आती है तो उसको भी हैंडल किया जा सके. Now, the other news is an editorial why Republic Day is celebrated. This particular news might be important for General Studies paper 2, salient features for Indian Constitution. We'll understand the detail of this editorial. So I'll be just discussing this under three subheads. The first would be a republic in India. A republic is against monarchy, republic and democracy, and the way forward. The entire editorial focuses upon the journey of India's in terms of the republic, right? So this would be journey of India, republic, not journey. Right. Now moving ahead, preamble of the constitution declare करती है that India is a republic, right? और ये जो declarations हैं ये एक self descriptions हैं जहाँ पे we must take it seriously, where republic is an integral part of the political identity. India became republic on which date? Most of you must be aware. This is 26th of January 1950 was the day when India became independent. राइट, दिस इज द डे. इंडिपेंडेंस हमें 47 में मिली थी, पर जो रिपब्लिक अडॉप्ट की गई थी वो 1950 में की गई थी. नाउ बीइंग अ रिपब्लिकन, द आइडिया टू विच वी मेंट इज अ कंसिस्टेंशन एस्पिरेशन दैट शुड कंटिन्यू. एंड इफ आवर पोटेंशियल आइडेंटिटी लूजेस द रिपब्लिक कैरेक्टर, वी मस्ट all the institutions, even the individual who is a citizen of this country, must act to restore this as quickly as possible. So रिपब्लिक एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसके एस्पेक्ट्स बहुत ही बड़े हैं, और रिपब्लिक एक ऐसी डिसेंट कैरेक्टर्स है जो किसी भी स्टेट को सिग्निफाई करती है, उनके सिटीजन और उसके पूरे गवर्निंग के फंक्शन को. नाउ गवर्नमेंट्स बाय डिस्कशंस की बात की गई है. कैसे? द वर्ड रिपब्लिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज रिपब्लिका. रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पे पब्लिक की स्टे होती है, राइट. एंड देन रिपब्लिक इज एसोसिएटेड दैट वी टुडे कॉल द पब्लिक स्फीयर, जहाँ पे म्यूचुअली सारी चीज़ें की जाती है, पब्लिक के कंसेंट से की जाती है, पब्लिक को एक बोलने का स्टे होता है अपनी बातों को, राइट. सो रिपब्लिक इज गवर्न्ड बाय द फ्री एंड ओपन डिस्कशन. दिस इज द रीजन बीइंग गांधी जी यूज्ड स्वराज टू चैलेंज नॉट ओनली द पॉलिटिकल colonization ऑफ ब्रिटिश बट ऑल्सो द colonization ऑफ आवर माइंड. आफ्टर ऑल, अगर सिटीजन की बात करें, दे बिलोंग टू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी where they can express and act freely. This is a power of being a republic and democratic country. The citizen alone have a political liberty without any mere subjects. Now, क्या difference है republic और democratic में? अगर republic की बात करें, it covers the term democratic as well, right? I've told you republic is a big term, right? अगर democracy की बात करें, democracy would come under republic, right? So, Constituent Assembly was initially looking into the aspect जहाँ पे उन्होंने कहा कि रिपब्लिक itself mean that this is a democratic. तो जो डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिक के अंदर ही आती है, राइट. एंड द आइडिया ऑफ रिपब्लिक कन्वेज दैट डिसीजंस शैल बी मेड नॉट ओनली फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल बट फॉर मासेस एज एन लार्ज. और हर एक इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो राइट फोरम पे अपनी बातों को रख सके. द वर्ड डेमोक्रेसी मेक्स द रिपब्लिक इंक्लूसिव इन नेचर and no one is excluded from
the citizenship, for example, all of us have a right to vote. किसी भी जगह पे bifurcation नहीं है, चाहे caste, grade, sex or any other reason. There's no separation in terms of giving vote. But the thing, you have to be 18 plus to give a valid vote. वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जो टर्म रिपब्लिक है, यहाँ पे इस चीज पे फोकस की गई है दैट फ्री पब्लिक डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन, राइट. अगर आप मोनार्ची की बात करेंगे, जैसे चाइना की बात कर ले, इवन इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया, these country are actually not allowing their citizen to have their say, right? I'm talking precisely about China and North Korea, right? So these two countries do not allow their people. Even अगर कोई ऐसी situations होती हैं तो वहाँ पे citizen के participations को भी ignore किया जाता है. It gives depth to our democracy. This is a beauty that we are a republic and democratic country, and it is mandatory that decision has to be taken with a representative, जहाँ पे proper deliberations होती हैं, remain open to scrutiny. No, scrutiny किस तरीके से, जहाँ पे parliament है, even there's a supreme court, there's every check and balances which is taking place, even public legally contested after they have been made. So this is how the feature, work in synchronizations between the government, judiciary, and the citizen of this country. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed with the question, just to tell you the answer of yesterday question. For first question, the correct option is C. For second question, also the correct option is C. Today's MCQ quad grouping के बारे में आपको correct option find करना है. The fourth nation of India, Australia, and US and Russia. It aims to safeguard interest of democratic nations of Indo-Pacific and address the global challenges. So you have to check which among the following is the correct option in this. The second Malabar exercise, it is an annual trilateral naval exercise between navies of India Army, Japan, and USA. The exercise is held alternatively in the Indo and Pacific Ocean. So again, जितने भी military exercise है, this would be important for your UPSC prelims examination. उसके अलावा जो CAPF के exams होते हैं, वहाँ पे भी काफी important. So this was all about the daily news and editorial analysis discussions. If you have any other concerns, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.